participant for the tele workshop of 5 days. And for all the 5 days, our speaker will be CA Vandana Dodhia. And before that, may I request Vinayji to run our institute motto, and may I request all the participants to put their right hand to their heart, please. येष सुप्तेषु जाग्रति येष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तदेव शुक्रब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्द्वैता 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 एतद्द्वैता. Thank you. Sarvani Madam, if you want to say anything about this program, please. Good afternoon, everybody. Our respected Pinky Madam and our learned faculty for Tally, Vandana, were very live and energetic faculty, and all my participants out here would join to learn Tally from a very experienced and viable faculty. Friends, I only wish you all the best learning. Everybody, I hope, have your laptop in hand so that whatever she teaches and you practice on spot, so that you can clear your doubts and do not carry your doubts yourself. So please see that you take maximum advantage of this 5 days and learn Tally from the best person. And thank you, and everybody enjoy learning. Over to you, Pridli. Thank you, Sarvani ma'am. Actually, the mastermind behind this workshop is Sarvani madam and Vandana. So we should thank them for this. And before starting, I want to introduce Speaker Vandana with a few words, few sentences you can say. So let me introduce you to a versatile personality, C. Vandana Dodhia, which is full of life and energy. She is self-made person, and she is working in the field of tally, accounts, income tax, GST, or management consultancy, etc. She qualified as a CA and LLB, and she is also DSA qualified. She is also qualified in forensic audit and fraud detection certificate. She is popularly known as tele evangelist and motivational speaker. So, and she was the co-opted member and in various committee in WIRC of ICI. She is also committee member of coaching class committee of GST PM. She is an advisory group member of Borivali Central CP Study Circle, and where she served as a convener in the year 2000-2005. She has started women wing of BC, SC, and SGAF. She is a life member of various professional associations, and she has addressed them more than 200 meetings and workshops on various platforms like Study Circle, branches of WIRC and ICI, Chamber of Tax Consultants, GST and Service Tax Practitioner, Jain Account Federation, etc. And her journey of becoming CA have been published in book Swing, that was published on 8 March 2020. Her life journey then published by ejobocean.com in June 2020. In July 2020, her story was published in the financestory.com.
her interview featured in online magazine also. She is an important social contributor and passionate singer. She is Vice President of Rotary Club of Burivali for the year 21-22. And music is her passion. Let us welcome with her good life round of applause. So, Vandana, now floor is yours. You can continue. And I don't want to come between you and the participant. Please carry on. Thank you, Pinky. Can we have one look of all the participants who can start video? At least we have a feel to whom we are addressing. We are very small gathering. थोड़ा सा एक फील ले लेते हैं, एक ग्रुप फोटो भी लेके फिर बाद में वीडियो ऑफ कर देंगे, चलेगा. And good afternoon to one and all. Thank you for Sarvani madam for giving me an opportunity to share the knowledge, because we all believe sharing is caring. Pinky for such a wonderful introduction. Pinky and I resemble each other together. We are very good friends, you know. I think serving the profession gives you good friends, and one of them is Pinky to me, you know. And we are missing Sweta's presence because she also part of a woman empowerment committee. Actually, she conveyed me that she and Chairman sir is in Pune for arrangement of regional conference. So yes. She informed that she will unable to attend the today's meeting. कोई वादा नहीं, 5 दिन है, जब भी 2 मिनट मिले उनको बोलो आ जाना कभी भी. Welcome anytime for their words of wisdom. We will like to listen. And so if Misaji, they can start the video. Vishwa, put the participants in. मैडम ये वेबिनार किया है ना मैडम, चालू मीटिंग नहीं किया, वेबिनार किया है, वेबिनार में नहीं. So they can't have the video on. Chat पे ही बस. Okay, no problem. So Vandana, how will you like to take a question answer at the end or between your session? एक session, after one session, basically मैंने flow chart बनाया हुआ था. जैसे जैसे एक particular topic अपन cover करेंगे, when we finish one topic, so there and there if they have some questions which I can answer immediately, or else I will park it later on if it is not fitting into the frame of what we are learning, you know. So ideally they can put in a check box and you call out for me, okay, once the one particular portion of the topic is covered. Today we are starting with the basics, like we are believing this is a beginner course. So from a scratch we will start. Okay, once how a Tally Prime can be downloaded. Most of them have seen the Tally ERP 9. So they have a most question I want participants to understand. Okay, as of now, Tally Prime is a added version available to you on your system. If you have a licensed version of ERP 9, you can still download Prime. Both ERP 9 as well as Prime will function in your system because some of your clients may be still in ERP 9. So if you receive the data in ERP 9, you can work in that ERP 9 itself. Workshop के क्या माने? Sarvani madam, mute करवाना चाहिए. Okay, sorry. So where I was, so the first criteria is that we don't need to worry, but understand when the new product comes, there will be less support. So new features or new compliance or new releases will be coming in Prime only. So we have to understand that we have to gear up to learn the new product. And obviously new product has come with the very, very new features which are very comfortable to us. They have tried to cover up. I will showcase you, those of you, actually I wanted, क्या chat box में लिख सकते क्या how many of them have seen the Prime? That is the first question actually. So एक idea आ रहा है उनका bandwidth क्या है उनका? Okay, Payal has seen, Ekta has seen, Suvarna, Rishma has not seen. Okay. Jagdish Shah, Ave Tyamgat, Easy TV, male member is also allowed. Kejal Savla, yes. Isha has seen, yes. Okay.
So moreover, they have the basic feel of the Tally Prime. Okay. So in that scenario, but still, there may be one person who will like to know how the system starts. So I will try all of you to have Tally Prime in your laptop or computer where you are working practically. So all of you are trying, you can have a hands-on when I am doing something, we can also do together. So we will learn it and make it more vibrant. So whenever you go to Tally Solutions website. Okay. I go here and I type www.tallysolutions.com. So solutions is the proper word. S you have to type, and here is your website. It shows you whether you want to download, upgrade now, or take a free trial. That's what it comes. Resources, there is a CA community. For CA, there is a special features are available. All the videos are saved, all supports are saved, webinars are there. So whenever you are having any help support, you can go here about resources. You can see each information is available here in the Tally website. Now products, and I want to see Tally Prime. So I can download the product. So यहाँ पे the Tally is giving you 7-day trial also before buying. And for CA, there is a tie-up between the ICAI and Tally Solutions. So there are some discounted prices available. So whatever may be the case, you can go ahead like that. One second. Tally Prime release, ये ले लो. This is how you can download. जिसके पास already PRP9 है वो भी ये setup.exe download कर सकते हैं. After downloading this, you have to run setup run करेंगे तो फिर Tally ये Prime जो folder में आपको save करना है वहां पे save करेंगे and then you will run that exe. So once the exe is run, a Tally Prime will be shown on this. Your desktop Tally Prime icon will come. So when you start this Tally Prime, first feel of the Tally Prime, let us understand how it works. Because today we are going to cover create company. Basics we have to start with, that's why. So these are the already created company, but here is the first screen, create company. Where I go here, first you take a backspace, company data path can be created, specified. Right now it is already some path is there, you want to change. So first most beauty of this Tally Prime, what is that? Control-C, Control-V function has been enabled. And I'm used to do Control-Alt-V. So Control-Alt-V also will function. But now here the beauty is that you can Control-C from the browser and you can just paste using Control-V. I hope I am audible, audience, getting proper audio. थोड़ा सा चेक बॉक्स में डालना पड़ेगा. यहाँ पे हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं तो मुझे वो एक फील नहीं आ रही है. But anyways, be. So here today is suppose we want to write our session.
So what I will do, suppose कि अपना IT written meeting and presentation, आप जो path decide, whatever path you want to decide, you can decide that path and workshop. So let's create our company. So I will press Ctrl C, I will press Ctrl V, and once I have decided that path, I can create a company name, say workshop on Tally, WRC. Whatever is the mailing name you want to put. So if I want to put something different that is editable, by default, whatever is your company's name will come as a mailing name, then your address. You may find it little, very row level but this is very basic. One should know what is the implication of this. And then your address, suppose it is company name and whatever, suppose BKC and Bandra, East and Mumbai. Now, once you come here, I write Maharashtra, so automatically country will be picked up by the Tally. So now it is very artificial intelligence. Moment you put the state name, Tally will understand where are you from. And the basic, whatever information you will put here, whenever you are sharing an email, any documents to the outside party, you want to share your invoices, you want to share ledger or outstanding statement or whatever maybe you are mailing to some third party, your company's basic details, whatever you have fed in here will be coming in that printout. So whatever general, some people feed the data, some people skip it, but basically the whole company's basic data which you want to convey to the outside world should be posted here. So I'm posting my mobile number, then my email ID. So you can do this, and if you have any website, you can write that also. So anything, whatever you mention here will be going. Then financial year beginning from and books beginning from. What is the difference between these 2 days? Generally, you may start business today. So today is, if our session is starting say on 17th of May, my financial year will start from 1st April 22, but my books will begin from the 17th of May 22. So this is how, whenever your business is starting, that books beginning can be from that date. So prior period items or whatever will be there will be taken care, and that will be rest assured. Now, control user access to company data. This is very important feature. Huh? Most of the time हम पूरा एक दिन का session on security controls करते हैं, because your data is your private data and need your security. Always have a secure data. So you say yes to this, and then this username is very sensitive, important. It is an administrative username and password. You don't allow to forget it. So whatever you type, please remember, try to have alphanumeric password, which is for better security. Now, Tally is alerting you, forgetting your password will render your data inaccessible. Press any key to continue. Then there is something called Tally audit features. Now, it is inherent Tally audit features. Which user has entered how many data when he logged in. That Tally log was predominantly there from the ERP9 era also. So, enable Tally audit feature is different from the auditing in Tally. There are 2 different menus you have to understand. This is Tally audit features for giving me the report for the users who have entered the data, master's creation, and that database is from this enable Tally audit feature. So I enable Tally audit features. What do you mean by disallow opening in educational mode? So if I say yes, then I can't open my data in educational mode also, and that is very bad. Because sometimes there is no connectivity and I want to at least see the data in my laptop, or my license is not renewed for that matter. So still I can watch this particular data of Tally. So disallow opening in educational mode should be always kept no. And just press enter. And now, previously we used to go for F11. Now, moment you create a company, Tally will prompt you which are the features you want to have in a new company. So that's why we started with a create company.
So we understand the implication. Now your data is secure because without password, no one can get inside your data. I hope you are with my pace. Pace is okay. I'm not getting security tape. So, okay. So on right side, F12 you press, it will be there. Rashmi, you press F12 on a company creation screen. It will ask you security control, yes, enable yes. So every screen of Tally, you need to explore the F12 configuration. That's what we have to understand. Wherever there is something not coming on our screen, so something may be hidden on F12, which if we enable, it will start reflecting, coming on the screen. Okay. So basically, generally, Tally is termed as an accounting software, but Tally has tried to cover whenever possible inventory as well as, so in the third or fourth day will be learning inventory as well as job order processing, go down, costing, profit center, all that will be covered in that. To start with, suppose we are maintaining accounts. So here is the accounts. So enable bill wise entry. I generally say that now in the GST era and wherever MSME also in Companies Act also, you all need due dates wise or your outstanding for how many days. That report can be generated only if I am having the habit of data entry through bill wise entry. So whenever I do bill-wise tagging, there is a report can be generated. So when we say, okay, I want some MIS from the Tally, if my configuration is not proper, I will not be able to generate the report in the way I want. So while creating company creation or while creating a ledger account, I need to take care that I enable bill-wise entry. So then only you can track the outstanding bill by bill plus due date-wise report can be generated. So this, yes, right now we are not enabling cost center. Moment you will enable cost center, it will allow you to create cost center. So that we will take up in the next session. What is by enable interest calculation? Now, this is very important. I say you must enable yes. What enable interest calculation? अगर feature में मैंने yes किया है, so Vandana, can I ask you one question? बोलो ना बीच में पूछ सकते हो. आई वांट टू आस्क कि सपोज मेरे पास में कोई डेटा है वो टेली ERP 9 का है, ठीक है, अभी मैंने उसको टेली प्राइम में कन्वर्ट कर मैं खोल लिया, तो बाद में मैं वापस से टेली ERP 9 में खोल पाऊंगी कि नहीं? खोल तो पाएंगे लेकिन डेटा लॉस होने के चांसेस बढ़ते हैं. कंट्रोल ऑल्ट आर करके रीराइट द वर्जन करते हैं. कंट्रोल ऑल्ट आर रीराइट द वर्जन. सो when you will now you worked for 1 minute in say prime, so some data entry you have done, and then you go back to ERP 9, the same data you will copy into the directory, and then you type control alt R, tally ERP 9 खोलेगी ना तो वो बोलेगा this is not the version, so you have to press control alt R, and then it will ask you which company, so that data from prime which you have pasted, that company you select and try to do, but I want don't try to do, मतलब कभी डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं, मतलब कुछ एंट्रीज इधर उधर हो गई, बिकॉज आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है ना पूरे का पूरा उसका, एवरीथिंग इज चेंजिंग. सो ट्राई टू अवॉइड एज फार एज पॉसिबल. So better if we have transferred our data in Tally Prime, we should not open in Tally ERP. Come back to the lower version. जनरली क्या होता है, एक बार आप एंड्रॉइड वर्जन से फिर आईफोन में जाओगे तो आईफोन से एंड्रॉइड आना मुश्किल हो जाता है. अभी क्या है चेक, मैंने किस लिए पूछा कि अभी हमारे जो क्लाइंट्स के जो सब मैक्सिमम लोगों के वैसे ही होगा कि क्लाइंट इज यूजिंग टेली ERP 9 एंड इफ वी आर यूजिंग टेली प्राइम, we have to educate them, we have to train them. It's slowly everyone. अभी तो एक साल के बाद वो बोल ही देंगे ERP 9 सपोर्ट क्लोज, तो क्या करेंगे? So let us try to educate. और कुछ नया नहीं है, सी as such F11 तो सेम ही है, खाली स्क्रीन के कलर्स चेंज हुए, पहले उसमें ग्रीन कलर था, पिंक कलर था, इधर व्हाइट कलर हो गया. बेसिक आर्किटेक्चर इज सेम, उल्टा इसमें आपको एडेड एडवांटेज मिल रहा है कि आप यहाँ खड़े खड़े अभी मेरे को कुछ देखने को, सडनली आई स्ट्राइक समथिंग, तो आई कैन move to jump to the next screen without disturbing my this screen. Alt G is a go-to feature has come. So there are certain things which has come new. So let us explore the new world. And with technology we have to upgrade. See, आज का program भी है upgrade and reskill, upskill yourself.
So that is what Tally has upskilled themselves to Tally Prime. Let us all move to Tally Prime. That is my humble request, you know. And by the time 10 hours अगर attend करेंगे आप, आपको समझ में आ ही जाएगा कि now let us really move on to Prime, you know. So now come in enable interest calculation. I was on that particular feature. This interest calculation feature helps you while in a loan party when you want to give interest, partners capital you want to give interest. If you have also have some FDs kept with the bank, there also you can calculate the Tally will have a feature to calculate interest for creditors payment, for debtors payments. जहाँ जहाँ पे आपको interest calculation workout करना है, so you can enable this interest calculation. And there's a interest report module itself is there. जैसे cost center का reporting module है, वैसे Tally के अंदर interest का भी module है. So moment you enable से लोन के मेरे 10 लेजर है अनसिक्योर्ड लोन के, सिक्योर्ड लोन के भी आप लेजर में खोल ही सकते हो, जहाँ पे कार लोन ली है, होम लोन ली है, इंटरेस्ट रेट आपको स्पेसिफाई करना है. So whenever I enable this feature, there are reports comes. So the word used is MIS is nothing but every report in Tally can be generated provided you configure your ledger properly. Then comes and I think it's with compliance of Caro also, na? Caro में भी जो कारो के हिसाब से हाँ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आपके प्लेस पे हो जाएंगे. आप बोल सकते हो इफ समवन इज यूजिंग टैली, आपको वहां पे जब कारो में लिखना पड़ता है कि वेदर कंपनी इज आईएफ, तो उसका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है कि नहीं. तो आप इसमें बजट भी बनाओगे, सिनारियोज बनाओगे, यूजर नेम है, पासवर्ड के बिना एक्सेस नहीं है, सेकंड लेयर अथॉरिटीज भी हो सकती है. देयर आर एड-ऑन्स अवेलेबल फॉर सेकंड लेयर सिक्योरिटी के लिए. फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी तो हम नॉर्मल टैली के अंदर ही आता है कि आपको जितना एक्सेस है उसके ज्यादा आप देख ही नहीं पाओगे. मतलब आप डेटा एंट्री ऑपरेटर को परचेज की खाली वाउचर एंट्री करनी है तो सिर्फ वो वही कर पाएगा. सेल्स वाले को सिर्फ सेल्स करना है, वो सिर्फ वही कर पाएगा. अच्छा, वहां तक भी है कि वो एंट्री कर दिया, फिर एडिट का राइट नहीं है तो वो एडिट भी नहीं कर पाएगा. सो इट इज लाइक टाइट सिक्योरिटी के साथ डेटा चलता है, प्रोवाइडेड हमें कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली करना है. वो वन टाइम जॉब है. वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन ऑलवेज चार्ज मास्टर कॉन्फ़िगरेशन. दैट इज व्हाट I want female chartered accountant to take that kind of assignment also. कि हमें चलो अकाउंट्स नहीं करना है, बट उनके अकाउंटेंट को हम एजुकेट करें ताकि हमारा रिपोर्टिंग सही आवे और हम जब ऑडिट कर रहे हैं हमारी लाइफ आसान हो जाए बेसिकली. सो कमिंग बैक टू अगेन द टेली स्क्रीन, एंड बीच बीच में तू रहेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आई गेट लॉस्ट, यू नो. तो मेंटेन इन्वेंट्री. सो अगर हम इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं, अभी कभी कभी लोग बोलते हैं मैं तो सर्विस इंडस्ट्री में, अपना ही एग्जाम्पल ले ले, चार्टर्ड अकाउंटेंट, we don't want to maintain it. मैं मेरी पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट अगर लिखना चाहती हूँ, माइंड वेल we all have the habit of saving. In India everyone saves, and I remember हम मैंने और पिंकी ने साथ में ना वहां पे औरंगाबाद में एक लेक्चर लिया था. कहाँ पे लिया था? You spoke on investment, right? Yes, yes. So investment is a predominant aspect of Indian people. तो कोई भी एक इंसान जिसको अकाउंट्स लिखना है लेकिन वो इन्वेस्ट तो शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में करता है, तो अगर म्यूचुअल फंड की उसको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो उसको यहाँ पे यस करना है. मार्क माय वर्ड्स, यहाँ यस करने से क्या होता है कि मैं जब शेयर्स में इन्वेस्ट करती हूँ और मुझे क्वांटिटी वाइज डिटेल्स लेनी है तो मैं कर सकती हूँ. तो डिफरेंस हमें क्या समझना है कि व्हेन आई एनेबल दिस फीचर आई हैव द सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी गिवन बाय टैली कि इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री. सो आई से नो, बिकॉज मुझे मेरा ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का जो भी स्टॉक है वो मुझे यहाँ नहीं लाना है. तो आई विल से नो, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग वी आर डूइंग. अंडरस्टैंड? अगर स्टॉक समरी का आप ट्रेडर हो और आपने फिर भी नो लिखा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. द रीजन आई विल एक्सप्लेन यू कि टैली हैज गिवन यू फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, दैट यू कैन मेक इट दैट वे कि you prepare your accounts with inventory, and inventory valuation is there. I will also show you different kind of valuation methods. If you also can remind, participant can remind me whenever we will see the final closing balance sheet. जब देखते हैं, जब हमें P&L close करना है, finalization of accounts आएगा. अभी तो company creation में हम लोग start किया है, तो finalization के time पे I have a method. तो अगर मैं जब inventory create करती हूँ तभी ही वो टैली मुझे प्रॉम्प्ट करता है what will be the valuation method you will be following. And in 3CD also we report that company values the closing stock at cost या first in first out, whatever method we are following. So all that can be learned from the tally कि client ने major stock item कौन से उसमें
मेथडोलॉजी में रखा है. वंस द वैल्यूएशन कम्स, आपका स्टॉक समरी का जो वैल्यू है खाली वो हाथ से आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, एंड यू नीड टू क्रिएट वन ledger called stock in hand. As far as trading goods are concerned, in manufacturing unit, you will have opening stock of raw material, finished goods, and WIP. So all that can be a ledger. Ledger can be created, and there is a one primary group comes in Tally is stock in hand. In that you can create. Why I am taking features में थोड़ा time कि basic ये features का importance क्या है ना, that we need to understand. अगर आपका फाउंडेशन, आपकी बिल्डिंग सही बनेगी, फाउंडेशन परफेक्ट रहेगा, ऊपर का तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. सो वंस आई इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी, टैली विल पिक अप द वैल्यूएशन, मतलब स्टॉक वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम योर ट्रांजैक्शन वैल्यू. सो इफ आई से नो, इट विल नॉट पिक अप, बट इट विल गिव मी flexibility to input the value with myself. I can input the value. Then enable multiple price level. Some people have that price level in their industries. There are multiple price level. Then you need to insert that price, retail price, wholesale price, जो भी price का वो पूरा list बना के आप डाल सकते हो. Batches. So certain industry like pharmaceutical industry requires to maintain inventory in batches. Then you can enable this. Then expiry date for batches. Moment you say yes, तो expiry date भी आ जाएगा. Right now we are not in the inventory model. जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, वो भी जिनका जॉब पे काम जाता है, तो सब कुछ जो भी होता है वो आपका कंपनी क्रिएशन के थ्रू ही मेंटेन होता है. यहाँ पे F11 एक बार आपने मास्टरी कर ली, इसको ऑन किया, फिर सब फीचर ओपन हो जाएंगे आपके लिए काम करने के लिए. कॉस्ट ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, जॉब कॉस्टिंग भी यहाँ से हो सकता है. डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, अभी बहुत सारे लोगों को डिस्काउंट कॉलम चाहिए इनवॉइस में, तो यहाँ पे यस एनेबल कर सकते हैं. सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी. कभी कभी क्या होता है 1000 किलो है, उसमें से जाता है वो 0.02 का उनका एक्चुअल वैल्यूएशन, एंड बिल्ड में थोड़ा सा वेरिएंस रहता है, तो दैट आल्सो यू कैन मेंशन यस हियर इफ इट इज सेपरेटली डन. नाउ एनेबल्स, यहाँ पे ही है क्रिएशन, कंपनी क्रिएशन के अंदर ही है सब कुछ. गिव मी 1 सेकेंड. Okay, so because we are going to learn GST in depth, right now I'm just putting yes because I just went and checked. तो अगर मैं यहीं पे सब करते जाऊंगी तो आपका ये पूरा यहीं पे मॉड्यूल चालू हो जाएगा. तो एक बार यस करोगे तो पूरा जीएसटी का हमें अंदर जाके वो डिसाइड करता है. टीडीएस भी आपको एप्लीकेबल करना है तो यहीं पे यस कर दो, और यहाँ पे आपका 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, जो भी रहेगा. ऐसा है तो लाना पड़ेगा 52563C, ऐसा some characteristic 10 number and 10 registration number. I also don't know what is registered, but 10 number जो ऊपर लिखा है वही मेरा 10 number है. और यहाँ पे उन्होंने जो प्रॉम्प्ट भी किया टैली में कि अगर आप सही कैरेक्टरिस्टिक नहीं डालते हो, कंपनी है या इंडिविजुअल एचयूएफ है, डिडक्टर की ब्रांच डिवीजन, ये भी आपको यहीं पे स्पेसिफाई करना है. जो भी करना है वो वंस यू गेट इनसाइड, everything need to be inputted. The whole actual data need to be given there. ये वैल्यू एडेड टैक्स जिनका पुराना वैट और अभी भी इन आई थिंक certain categories VAT is still on, you know, so that's why they have kept this excise and service tax still on. ये हमारा जो ब्राउजर एक्सेस वाला मॉड्यूल रहेगा वो यहाँ से यस करेंगे तो तभी आप किसी को ब्राउजर एक्सेस दे सकते हो. व्हाट डू यू मीन बाय ब्राउजर एक्सेस? मेरा ये टेली का डेटा जो है वो मुझे डायरेक्टर इज आउटसाइड द ऑफिस और विद इन ऑफिस आल्सो वांट टू सी ऑन हिज मोबाइल, he does or on a laptop or wherever, any device he want to see, the company is on, server is on, the data can be seen by him, that is reports can be seen by him. The word used is very clearly browser access for report, so only report viewing is there is no data entry as far as browser access is concerned. And after that there comes enable tally.net services for remote access. Now where see, Tally license works with email address, we all know,
and it should be on. अगर वो चालू है, लाइसेंस इज एक्टिव tally.net सर्विसेज, तो अगर मेरे पास सिंगल यूजर लाइसेंस भी है तो मेरे एक लैपटॉप में मैंने टैली इंस्टॉल किया, विद द नेट यूजर मेरे दूसरे मशीन में से मैं ये मशीन का डेटा एक्सेस कर सकती हूँ. दूसरा मशीन कैन बी इन द सेम प्रीमाइसेस, कैन बी आउटसाइड द प्रीमाइसेस, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जहां से मेरे को वाईफाई कनेक्शन है, ट्राइबेंड कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन है, मैं कहीं पे भी बैठ के मेरे लैपटॉप के थ्रू टैली का मेरा मेन डेटा में जा सकती हूँ विद दिस फीचर, remote access. Now synchronization is generally used for the branch and main head office के डेटा को सिंक कर सकते हो आप. तो वो थोड़ा टेक्निकल है, उसके लिए पूरा एक मतलब क्या होता है, और उस पर आप डिसाइड कर सकते हो. देयर विल बी अ रेप्लिका ऑफ कंपनी, वन कंपनी इज क्रिएटेड इन माय ऑफिस, वन इज सेड पिंकीज ऑफिस, सेम नाम भी सेम रहेगा कंपनी का, एंड देन यू कैन कीप ऑन सिंकिंग द डेटा. तो जनरली जिनका हम जीएसटी रिटर्न भरते हैं, मैंने लास्ट ईयर किया था मेरे क्लाइंट का खुद सिंक्रोनाइजेशन मेरे ऑफिस में, तो हमें जाके खाली शी हैज टू जस्ट ऑन द ऑनलाइन कनेक्शन ऑन करना है और मुझे मेरे मशीन में जाके सिंक्रोनाइज का बटन दबाना है. तो जो मैंने काम किया वो उनके मशीन में, वो टैली में चले जाता है, और जो उन्होंने काम किया वो मेरे टैली में आ जाता है. इसका खाली ये है कि वो डेटा एक दूसरे का रिप्लेस हो जाता है, मतलब दोनों जगह पे. तो इट इज नॉट अ बैकअप पर से, but it is like same company happening at two places. So I advise whenever synchronization is on, still the main company should keep on taking backup in their other hard disk. God forbid कभी कुछ डिस्टर्ब हुआ तो हमारे पास हमारा खुद का बैकअप होना जरूरी है. अभी जिन लोगों को पेरोल मेंटेन करना है, टैली हैज गिवन इन डेप्थ पेरोल, बट हमने हमारे कोर्स में वो कवर भी नहीं किया है. यस करोगे आप एक्सप्लोर कर सकते हो पूरा F1 हेल्प मेनू. यहाँ पे देखो जो F1 है वहां पे अगर आप क्लिक करते हो, अगर यहाँ मैंने मेंटेन पेरोल यस किया है, मैं एनेबल पे स्टेट्यूटरी पूरा उसका स्टेट्यूटरी बेसिक पे, डीए, लीव सैलरी आप पूरा डिफाइन कर सकते हो. आप सब आपके स्टाफ का नाम डाल सकते हो और फिर उसका पूरा सैलरी का वो डिसाइड करके फिर वो रन कर सकते हैं. तो पेरोल प्रोसेसिंग इज देयर, बट आई एम नॉट टचिंग इट टुडे. बट जैसे ही आप F1 हेल्प को प्रेस करोगे, इट विल टेक यू टैली हेल्प पे. आप जब भी क्लिक करते हो वो आपको रिडायरेक्ट करेगा. आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग. यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे पेरोल आप टाइप कर दो, आपको पूरा वो दे सकता है. सो एवरीथिंग इज देयर ऑन अ हेल्प फाइल ऑफ टैली, वेरी इंटीग्रेटेड. बट उतना टाइम और एनर्जी और इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद को समझने के लिए. बट आप कहीं पे भी कभी इफ यू आर गेटिंग स्टक, every help is available on Tally's website. So let's go back to our Tally. So here is, so payroll is also there, you can explore. Enable multiple addresses. Now what will happen, I have my HO say here in Borivali, so I and branch at say Bandra. Then I can have primary address, सपोज हेड ऑफिस एट बांद्रा, वो अपना पूरा डाल दिया आपने, और उसके बाद आप ब्रांच डाल दीजिए, और ब्रांच का फिर आप एड्रेस डाल दीजिए कि तो यहाँ का जो भी है आपको इंफॉर्मेशन. तो टैली अलाउज यू टू हैव, इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू टू, मल्टीपल एड्रेसेस कैन बी क्रिएटेड. और यहाँ पे भी आप ईमेल डाल सकते हो, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है डाल दो. तो दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल एंड यू कैन यूज दिस एज पर योर नीड. कि जब इनका बिलिंग होता है या मटेरियल गोडाउन है भिवंडी में और वहां से जा रहा है, तो दैट टाइम दिस एड्रेस यू कैन पिक अप वेयर फ्रॉम द मटेरियल विल बी लिफ्टेड बेसिकली, एंड HO is already issuing the bill as such. Now mark modified voucher is very important feature of the Tally. What do you mean by mark modified voucher? So those of you जिनको क्लाइंट का जैसे ERP9 पिंकी ने अभी बताया कि टेली का डेटा आता है, तो ERP9 में भी ये फीचर है, आप F11 में जाके देखना. ये कब एनेबल करना है, जब डेटा आपको मेल में आ गया, आपके मशीन में डाउनलोड कर लिया आपने आपके लैपटॉप में, देन यू एनेबल दिस. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर एनेबलिंग दिस, आप जो भी ट्रांजैक्शन पे काम करोगे, there will be a separate report will be created of marked voucher.
मीन्स आपने टुडे डाउनलोड करके 4 बिल नहीं थे, आपने एंट्री कर दी फॉर एग्जाम्पल, सो देन इट विल गिव यू दी एग्जैक्ट रिपोर्ट कि ये 4 एंट्री आपने एडिट की या 4 एंट्री आपने ऐड की. सो इट बिकम्स इजियर फॉर सेंडिंग दैट फाइल एक्सेल में भेजो, एक्सएमएल में भेजो, ताकि सामने वाला इंपोर्ट कर सके या वो खुद एंट्री कर सके, क्योंकि उनका तो ऑनगोइंग डेटा चालू है. तो आप उनको अब न आपका डेटा भेज सकते हो आपका जीएसटी 2-3 दिन में लॉक होने के बाद. So what I suggest, It's like audit trail. It's like audit trail. no audit trail. It is like a separate report only generated. Mark, modify vouchers. I will give you an example. मैं इसका चाहिए तो बाद में तेरे को एग्जाम्पल भी दूंगी इन द ड्यू कोर्स. आज ही एक बार दिखा दूंगी कि कैसे इसको हम हमारा डे टू डे यूसेज में कर सकते हैं. जब क्लाइंट हमें जब भी डेटा भेजता है, अभी सबका आ रहा है ना 3B के लिए डेटा, सो एट दैट टाइम व्हेन आई डाउनलोड, मैं मार्क माय वर्ड्स, व्हेन आई डाउनलोड देन आफ्टर दैट ओनली आई हैव टू एनेबल. नहीं तो क्या हो जाता है, अगर उनकी सिस्टम में ऑलरेडी मार्क वाउचर है तो जितने वाउचर्स वो लोग एंटर करते हैं वो भी वो रिपोर्ट में चले जाएंगे. देन इट विल नॉट मेक. This option I was using when I in COVID period in Tele ERP9 when I was giving remote access to my staff. So at that moment I am putting this yes, so I can come to know how many entries they had they did that day. कि पूरा दिन उन्होंने लेके तो रखा लॉगिन, बट पूरे दिन में 5 एंट्री मारी कि 50 मारी, वो पता चलता था उससे. बराबर. ये एक रास्ता ऐसे हुआ. और जो तू अभी जो भी तूने बताया ना, उसके लिए वो जो मैंने टैली ऑडिट फीचर बताया ना, यस करने को, उसका खुद का एक रिपोर्ट है. उसमें आपके से ए यूजर ने 4 तारीख को कितनी एंट्री की थी वो भी उसमें आपको रिपोर्ट मिलता है. यू डोंट नीड दिस मार्क वाउचर फॉर दैट. Okay. मार्क वाउचर in Tele ERP9 also we can do that, ना? या इट इज देयर इन टैली ऑडिट फीचर का एक मॉड्यूल ही है वहां पे. तो आप जाके उसको एनेबल कर देना. एक पहले आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ऑल्ट F1 कंपनी अल्टरेशन में जाके एनेबल टैली ऑडिट फीचर्स यस करने का. ज्यादा करके एनेबल ही होगा, खाली तूने एक्सप्लोर नहीं किया होगा. और एज यू स्पोक, मुझे लग रहा है तू हर क्लाइंट का डेटा में यूजर आईडी पासवर्ड डालती ही होगी, आपके स्टाफ में भी डालते हैं. करेक्ट. ये हमें हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मुझे खास समझाना है कि प्लीज यूज द सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर्स. अगर आप ये नहीं यूज कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है. प्राइम और रिमोट एक्सेस ये सब चलेंगे ही नहीं. पहली बात तो रिमोट एक्सेस विल नॉट वर्क अनलेस यू, बिकॉज वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी कंपनी तो ही उसका फन है इजीली. सो मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स. अभी समझो मैं even you can't give remote access if you don't have user ID password. Correct. They will not allow you to take the features of remote access. वो प्रीडोमिनेंट फीचर है. अगर आप वो नहीं रखोगे तो आपको आगे लेके ही नहीं जाएगा. सो पार्टिसिपेंट कुछ यहाँ तक क्वेरी है तो यस नीचे चैट बॉक्स में डाले तो अपन नेक्स्ट मॉड्यूल सिक्योरिटी कंट्रोल पे जाने वाले हैं. यहाँ तक अभी तक कोई क्वेरी, कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस लाइक पिंकी? If you want to go ahead, type go ahead. If you want to ask any question, please share in your chat box. Yes. Please type go ahead if you don't have any question. यहाँ तक सब ठीक है ना? Yes. और इसको एक्सेप्ट करना है, एस्केप करके बाहर मत निकल जाना. अब ये जो अभी ERP9 में कैसा था, राइट साइड पे सब बटन्स थे. यहाँ पे देखो ऊपर आ गया है पूरा मेन्यू अपने पास. आप जैसे ही कंपनी पे क्लिक करोगे पूरी उसके अंदर जो जो मेन्यूज है वो आपको दिखेंगे. क्रिएट, अल्टर, चेंज, सिलेक्ट, शॉर्ट, चेंज यूजर. तो हमने आज लिखा था क्रिएशन ऑफ कंपनी सीखेंगे. Vandana, there are 2 questions. Okay. If you had skipped that after creating company we want to change other feature, then how we can make it? वो तो कभी भी कर सकते हो. खाली इतना देखना है कि वो जैसे बोलते हैं ना हमारे रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आते हैं तो डेटा हिल नहीं जाए, वैसा कुछ भी आप कर सकते हो. And बेसिक आर्किटेक्चर. but she is asking how can we make it? हाउ कैन वी सी, कोई भी कंपनी क्रिएट करोगे तो कोई ना कोई फीचर तो आपको एनेबल करना ही पड़ेगा. बिना फीचर एनेबल किए आप आगे नहीं जा पाओगे. अच्छा, अभी मैंने मिडल ऑफ द ईयर इन्वेंटरी चालू किया फॉर एग्जांपल. जो उनका क्वेश्चन है उसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मिडिल ऑफ ईयर आप इन्वेंटरी स्टार्ट भी करते हो तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, क्योंकि पुराने डेटा में इन्वेंटरी की नहीं, वहां जाके आपको एडिट करके डालनी पड़ेगी. एज सिंपल एज दैट, यू नो.
और कोई स्पेसिफिक कौन सा फीचर आप एनेबल कर रहे हो, जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैंने बताया था, वो मैं आज भी कर सकती हूँ, पहले मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, मार्क मॉडिफाई वाउचर तो मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि क्लाइंट का डेटा मुझे मेल में इस मंथ का जीएसटी रिपोर्ट का जब आता है तो डाउनलोड करूँ, फिर मैं खोलू टैली और जाके वहां पे F11 में एनेबल करूँ, और फिर मैं जो भी करेक्शन करूँ उसका मैं रिपोर्ट देती हूँ। यहाँ पे देखो DOG करके देखो, यहाँ पे मार्क वाउचर का एक रिपोर्ट है, ऑल रिपोर्ट्स आर अवेलेबल। आपको समझा मैंने अभी जो बोला ना, दिल्ली पिंकी, देयर इज अ मैं भी वहीं से देखती हूँ, मैं भी आई एम आल्सो सीइंग फ्रॉम देयर दिस and फीचर्स। what we had asked shown them was statement of account। आप देखो गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में देखो टैली ऑडिट करके एक अलग से मॉड्यूल है। नाउ दिस टैली ऑडिट इज व्हाट, मेरे स्टाफ ने क्या काम किया है वो मुझे समझेगा। तो फॉर दैट मैटर लेट मी शो यू, समझो कि मैं आपको उसके पहले एक क्वेश्चन है, वो बीच में ले लेगी तो बेटर है। बोलना कैन यू रिपीट ऑनलाइन एसेस पार्ट? क्या फिर से बोल? ऑनलाइन एसेस दिखाया था, ऑनलाइन एक्सेस दिखाया था, एक देखो F11 में। अच्छा ओलू ऑनलाइन सॉल्यूशन, ओके आई बिलीव दिस इज व्हाट दे वांटेड। यहाँ जा कैन यू रिपीट ऑनलाइन एसेस पार्ट, सी सेइंग ऑनलाइन एसेस पार्ट। ऑनलाइन एक्सेस तो अपना है ना, कौन से दिन को है बेटा? ऑनलाइन किधर लिखा है? नहीं, अभी जो तूने बोला था ना F12 में जो कर रही थी ऑनलाइन एसेस का, वो वाला एक बार फिर से रिपीट करने बोल रही हूँ। उसका ऑल्ट के कंपनी था ना, अल्टरेशन, उसको ये सिक्योर यूज एक्सेस कम्युनिकेट, एक तो ब्रस्ट में था ये क्वेश्चन था, तो मैंने उसको बोला साइड में F12 में जाओ, प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल, यस, सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी। अच्छा अच्छा हुआ जिसने भी क्वेश्चन पूछा। द बेस्ट पार्ट इज दैट के 2.1 विथ एडिट लॉग एक अलग से EXE है, मार्क माय वर्ड्स, देयर आर आपको 2 प्राइम मिलते हैं अभी, एक 2.1 विथ एडिट लॉग। अब विथ एडिट लॉग वाली EXE में आप चेंज नहीं कर सकते हो एडिट लॉग। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में फीचर है सादा वाला टैली प्राइम। आई रिपीट, नॉर्मल टैली प्राइम EXE 2.1 रिलीज में जो मैं ये क्रिएशन स्क्रीन में हूँ और F12 में यहाँ पे मैं यस करती हूँ एडिट लॉग, तो ये कल को जाके मैं नो कर सकती हूँ, यहाँ पे आई एम ऑथोराइज। बट व्हेन आई डाउनलोड टैली 2 एडिट लॉग वाला जो EXE है उसमें वो फ्रीज हो जाता है, देयर आई एम नॉट ऑथोराइज, बिकॉज इफ द कंपनीज एक्ट वांट यू दैट योर लॉग इज अनइंटरप्टेड, तो यू कैन नॉट स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इन बिटवीन, अभी मैं रखूंगी ट्रेल, अभी नहीं रखूंगी ट्रेल, अंडरस्टैंड? So Tally has come out with Tally Edit Log करके एक अलग से EXE है जिसमें you are not allowed to change the this audit trail. Edit log switch on switch off नहीं होता। यहाँ पे हमने ऑप्शन क्यों दिया है? So that you get acquainted कि वो फीचर कैसे रन करेगा। तो ये एडिट लॉग कैसे रन करता है वो आपको नेक्स्ट 2 days में सैंपल में देखेंगे। Yesterday I did some data entry, and if I edit it, how it will look and how as an auditor I can see that, you know. Or vault password, तो then you can't see the company's name, so I don't allow that, and use user access control यहाँ पे yes है, तो वो वहाँ पे मेन स्क्रीन पे आया था। और एडिशनल जिनको मल्टी करेंसी करना है तो बेस करेंसी डिटेल्स में और कोई डिटेल्स डालनी है तो डाल सकते हैं। ये जो पूरा आता था ना ERP9 में जब कंपनी क्रिएट करते थे, सफिक्स सिंबल यस नो, आपको रूपी का सिंबल प्रिंट आउट में अटैच करना है, डेसिमल क्या है, शो अमाउंट इन मिलियंस, तो ऑल दैट कैन बी एनेबल्ड F12 में। सो इसको अभी मैंने कंट्रोल A कर दिया। हाँ, अभी मैंने तो कोई दूसरी कंपनी में आके किया था, ऑल्ट के शर्ट कंपनी। अभी आई कैन, यहाँ पे ऑप्शन है देखो, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, आई कैन गो फ्रॉम ड्राइव ऑल्सो डायरेक्टली, मुझे ऐसे जाना है, आई कैन गो, दिस फीचर इज ऑल्सो देयर, डेटा B01 current, and let us take up some company where someone is working, say who is entering, I wanted to show you Tally audit log, तो किसी ने काम किया है तो हमें पता चलना चाहिए। यहाँ पे अगर पहली बात पासवर्ड होना जरूरी है, ये मैंने एक बार पासवर्ड डाल दिया। आई वॉन्ट टू टेल यू इन Tally Prime देयर इज, मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था इफ यू रिमेम्बर, कि यहाँ पे
अपना जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप में देयर इज सम फीचर कॉल्ड एनेबल ऑडिट ऑटो लॉगिन। तो आपकी जितनी कंपनी है जहां पे आपका सेम पासवर्ड है, यू कैन एनेबल दैट लॉगिन विथ वन गो। आपको बार बार वो डालना नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखो सेटिंग्स है, मैंने F1 प्रेस किया था। सेटिंग्स के अंदर स्टार्टअप सेटिंग्स, आई रिपीट, सेटिंग्स के अंदर स्टार्टअप, स्टार्टअप के अंदर लोड कंपनीज और स्टार्टअप। अगर मुझे हर दिन चालू करके एक कंपनी खुल जानी चाहिए या दिखनी चाहिए, तो वो कंपनी का पाथ में यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तो नो है। इसको यस, एंटर मारेंगे तो यस होगा, एंटर मारेंगे तो नो होगा। फिर डाउन, शो मोर, यहाँ पे देखो स्टार्ट एप्लीकेशन इन फुल स्क्रीन, अगर यस करोगे तो पूरी स्क्रीन में आ जाएगी। और मैंने देखो एनेबल ऑटो लॉगिन फॉर कंपनीज विद द सेम क्रेडेंशियल, आपका यूजर आईडी पासवर्ड सेम रहेगा, तो आप इसको यस करोगे। सो देन व्हाट विल हैपन, योर डेस्कटॉप यू ओनली आर यूजिंग, देन यू डोंट नीड टू कीप ऑन पुटिंग द यूजर आईडी पासवर्ड। आई विल शोकेस यू द सेम। यहाँ पे यस है, आई रिपीट, यहाँ पे मैंने यस है। F1 हेल्प में स्टार्टअप सेटिंग्स में एनेबल ऑटो लॉगिन फॉर कंपनीज विद सेम क्रेडेंशियल, यस करो, कंट्रोल ए करो, फिर ऑल्ट के सिलेक्ट। अब है कोई दूसरी कंपनी चालू करते, देखो स्ट्रेट अवे आ गया, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मांगा, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द कंपनी आई हैव केप्ट द सेम यूजर आईडी पासवर्ड। अनलेस आई हैव द डिफरेंट वन, इट विल आस्क मी टू, देखो ये हो गया, the same user ID password, it will not ask me. Now we wanted to see that tally audit feature जो वहां पे था, statement of accounts, tally audit, voucher types है, masters है and users है। तो आप तीन टाइप के रिपोर्ट्स आपको मिलते हैं। यूजर वाइज भी मिलेगा कि वंदना एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कितनी एंट्री की है, अजय ने एज अ ओनर कितनी की है, और ये अच्छा अभी ये जितने नीचे जो नाम है वो हम क्रिएट करते हैं, वो हमें सीखने हैं। आज सिक्योरिटी कंट्रोल में हम वो सीखेंगे। ये मैंने दूसरी कंपनी की, तो उसमें देखो कितने वाउचर्स किसने किए। और जैसे यू वांटेड पिंकी के पीरियड वाइज, तो आपको पीरियड वाइज भी मिलता है कि मैं समझो कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल डालती हूँ यहाँ पे यूजर्स में। वंदना वंदना प्लीज रिपीट पासवर्ड। हाँ वो फिर से दिखाओ। ओके, व्हाट आई शोड यू ऑटो लॉगिन was in F1. Password and online access feature in F12. ऑनलाइन, अरे वो इधर था ना F11 में। सपोज यहाँ गए, यहाँ पे ब्राउजर एक्सेस मैंने यस बताया, अभी आएगा वो, नेक्स्ट आ रहा है। अभी तो हमें चलना है मैडम। अभी तो मैं बताऊंगी कि ऑनलाइन एक्सेस होता कैसे है। वी विल ऑल्सो शो देम, बट आई वाज वरीड कि रिमोट एक्सेस वेब ब्राउजर रिपोर्ट भी 5th डे में है। आज हमारा काम है पहले बेसिक समझो, टैली, गेटवे, बैकअप, रिस्टोर। कंपनी क्रिएशन पे हमने चालू किया। बैकअप एंड रिस्टोर मुझे वो बताना है, ERP9 का डेटा मैं यहाँ पे कैसे माइग्रेट करती हूँ, वो मैं अभी आपको सिखा दूंगी। उसके बाद में सिक्योरिटी कंट्रोल्स पहले लेना था, लेकिन मैंने F11 चालू हुआ कंपनी क्रिएशन, सो आई कंटिन्यूड विद दैट। ऑनलाइन एक्सेस एग्जैक्टली, क्योंकि जो है वो आगे आ ही जाएगा। पिंकी, अंडरस्टैंड? क्या तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसका क्वेश्चन क्या है बेसिकली। Actually, she is saying that in F12, can you repeat online access? This is the F12 screen, no? No. This is F11 screen. So she want in F12 there is online access. F11, yeah, in F11, in this F11. This is the this only this screen she want to know how this online access will work. हाँ तो वो तो अपना एक 5th डे का मॉड्यूल है ना, वो अभी कहाँ लेने का, खाली अभी यस okay. हाँ यस करना है। मतलब इसमें okay. तो इतने सारे, मैंने क्या बोला, ये फीचर्स को यहाँ से एनेबल करना है। आज हमें सीखना है कि कोई भी चीज टैली में चालू करनी है तो आपको F11 को याद करना है, और जब भी कोई रिपोर्ट देखना है या कोई डेटा एंट्री करते हो तो राइट साइड में आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन को देखना है। आप लोगों को व्हाट इसमें कैसे होगा, किसी को आधा टैली आता भी होगा। आज के प्रॉब्लम क्या होता है, जिनको थोड़ा आता है उनको लगता है कि इसको मुझे आंसर मिलना चाहिए, बट पार्क इट फॉर द 5th डे, तो वो आपकी इंक्विजिटिव बच्ची रहेगी। मैं तो अभी भी बता सकती हूँ, लेकिन आज का अपना
टारगेट ये है कि पहले हम समझ ले कि टैली में कंपनी क्रिएशन कैसे होता है, बेसिक फीचर्स. समुंदर है टैली, समुंदर. यू विल get all the answers. Slowly you will get all the answers. And thank you for reminding. I will try to speak in English only as far as possible. Someone has written, okay, please speak in English, you know. Okay, so online access feature will, I told one thing. Okay, I will repeat the Pinky, your voice. The question what Kajal I am trying to understand is that when your server is on, tele data is on, then you can give the access. How you will give the access? जब हमने यहाँ पे enable कर दिया है, यहाँ once you enable, so when you go to this company module, here is connect button. Online access के लिए you have to give the connect. When I press this button, suppose के मैंने इसको OK कर दिया, so there will be a C button will come. So anybody, your director sitting in his cabin or outside the office also in his laptop, रिमोट एक्सेस से टेली देख सकता है. अब वो कैसे देख पाएगा? तो आपके पास टेली उनके मोबाइल, मतलब मोबाइल में भी जाना जरूरी नहीं, ब्राउजर पे जाना है. इट इज तो वो अभी मैं दिखाऊंगी तो फिर उस दिन नहीं दिखा पाऊंगी. अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, क्योंकि वो ओवरलैपिंग हो रहा है. सो लेट अस पार्क इट फॉर द 5th डे, बट अंडरस्टैंड कि ब्राउजर एक्सेस डेटा शुड बी ऑन, उनको रिपोर्ट देखने को मिलेगा. दैट इज वन थिंग. दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ कमिंग बैक टू द कंपनी बैक, यहाँ पे क्रिएट हो गई. ऑल्टर करनी है तो आपको यहीं पे जाना है. और ऑल्टर कौन कर सकता है? जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव, द वन पर्सन हु हैज एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड ओनली कैन एडिट और ऑल्टर द मास्टर क्रिएशन या कंपनी क्रिएशन. सो दे ओनली आर ऑथोराइज्ड इन टैली. दैट इज द फाउंडेशन. ओके, alteration can be done by master password, so don't forget the master password. Now with master password we have logged in. I will disconnect this. देखो यहाँ पे connect मैंने ऑन किया था तो disconnect button is also now highlighted. And connectivity status में अगर आप जाओगे तो connected for browser access yes, connected to tally.net services yes लिख के आ जाता है. That is called connectivity status. In length we will learn on a 5th day. वो मैंने बाद में रखा है क्योंकि right now I want to create company, understand the features, then start doing the entry. And when finally I start doing the entry, my director will be happy to see the reports. Okay. So now coming back, we wanted something called security controls. मुझे आपको बताना था कि हम लोग security को last priority देते हैं. मैंने most of the companies में भी देखा है और चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिसेज में भी देखा है. They don't use the password. वो ऐसे ही आता है, कंपनी को एंटर करोगे डेटा खुल जाता है. That is not the right way. So users and passwords. अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो ये क्रिएशन के पहले एक होमवर्क करना पड़ता है. दैट इज यूजर रोल्स. व्हाट आर द यूजर रोल? नाउ बाय डिफॉल्ट टैली गिव्स मी these are the 4 type of security levels are provided. One is data entry, one is tally.net user, another is tally.net auditor, tally.net owner, and one more is there feature is that is called owner. Owner को सब rights होते हैं except the editing of the company. Alteration of company is not there. Rest most of the rights are there. Now these are the inbuilt security level provided by Tally. So if I press enter, it will take me to the next screen of the Tally where यहाँ पे अगर I press space bar, I will get the on a right side window. These are the security list available. As I said, data entry can be restricted. Now you can see disallow the following facilities. So these all facilities are disabled for that person. And whatever I want out of this, I want to allow, I can allow it on a right hand side panel. So basically क्या होता है, whenever you are entering into the security control, certain things I want them to see, certain things I don't want to see them. I need to decide that company features my data entry operator cannot alter. I only can alter that particular feature. So it is in my hand. So here from these I can select this and I can decide days allowed for backdated voucher. So 7 days, 10 days, 15 days, 30 days, depending on the company's policy, you can authorize that person to backdate vouchers.
और you have a cut off date. इसके आगे वो एंट्री जाके नहीं कर सकता है. So वो last year one person goes into last year and do the entries. So the problem is that when you are opening the tally and cut off date is mentioned, so that user will be from that day ahead, he cannot pass the entry. It will be prompting warning signal आ जाएगा कि you can't enter the entry before this particular date. Now, allow to save report views for this company. Yes, allow to delete saved views. Now in Tally Prime, something called save view has come. That is called save view feature. See, tomorrow I'm going to show you all the features applicable to chartered accountant or a person who is working day in and day out in Tally. There are certain reports they want to see. I want to see that report in a fashion which I like. So it is a user-defined report. So that is why it is giving me flexibility. Once I have saved that report, I can also delete that saved view report also. So that enabling that feature, yes or no, allowing that capability to delete that saved view, I can define here while giving the user the access right. See, what I told you is that security control is the subject in itself. Each item can go on length and length and length. We want to understand यहाँ पे security control is in place. Set alter rules for print before save. अगर you want to restrict the user to print anything or mail anything, you can restrict that. Allow to override text details. That also we are authorizing. We are not authorizing, then they cannot override the text details. Exclude on account from bill allocation. Now, this feature, why Tally actually came in Prime, this feature, why they have included. Understand the reasoning behind it. I told you in F11, that bill by bill entry is must. Some of them, just open the ledger. Bill by bill entry करते ही नहीं है. They just सेल बिल की एंट्री हो गई, पेमेंट की एंट्री हो गई, बट आउटस्टैंडिंग है तो खाली अमाउंट आता है, अगेंस्ट विच बिल कितना पेंडिंग है वो डिटेल्स ही नहीं मिलती है, तो यू आर नॉट यूजिंग टैली टू ऑप्टिमम. सो एक्सक्लूड ऑन अकाउंट फ्रॉम बिल एलोकेशन while doing the data entry. They are not authorized to park it on account. Either it should be advanced, either it should be against reference or new reference. These are the three things a user will be authorized to do. And that should be the way it should be accounted for, because ya to whatever money is coming as an advance, or it will be against some reference, or it should have a new reference. Because when I park it to on account, Tally gives me one report from statement of accounts, bills receivable. So bills receivable report will be generated using this referential thing. So that it will, in that report, it will not pick up on account transaction. So understand my point of view. When the user or a data entry operator is allowed to put on account voucher, your balance sheet may show data as only 5,50,000, but your receivables will show 17 lakhs also outstanding, because he has not knocked off whatever is required. Against reference is the predominant culture of Tally to manage your outstanding management, be it be payable or be it be receivable. So if you have a bill by bill accounting feature, it will really save your time. So exclude on account from bill allocation? No. Yeah, yes. Depending on your requirement, you allow them to do. Exclude new number from item allocation. Even for item allocation, I can restrict his entry. I can also restrict allow company to connect, yes or no. So while defining the authority or whatever information you want to transform to the user has to be decided based on the data entry security you are creating here. Allow company to connect, yes, and use Tally.net authentication, yes. Yahan, suppose I want to see, there are type of access, maybe alter head, create is there, create alter is there, display print, full access, preview, print. So each item, I want to authorize him to alter, or I give them right to do creation. I want them. So these are the list. And once I say, okay, it is full access, I am restricting.
And here also when I press space bar, see the 82 line items are still there, and more than 100 items are Tally is giving you to. So authorizing the user to see the reports itself will take you 1 or 2 days to define the authorities. What authority I want to give to this user from the features which is available in Tally. Are you understanding? Security control is a very important feature, and that is why that what Pinky said, that Karo mein internal financial control is in place or not, we can say with confidence, yes, if I am using this control mechanism properly, I am not allowing anybody to have access to any data, or alteration is authorized to the person who doesn't have a authority. So all that things can be taken care by these kind of security controls, So that is what I wanted you to understand. It is not only one thing is here, n numbers of transactions I can restrict and I can allow. I have pressed Control A. Whatever changes you do on that screen, you need to press Control A. And on this screen also, you need to press Control A to give effect to whatever saving you have done. Otherwise, the problem is that once you press the escape, it will remove whatever you have selected. So be careful whenever you are coming out of the security control screen, you have to press Control A. Till now, any question? Ideally, it should not change क्योंकि जो database रहता है ना, Karishma has asked, will these features be varied throughout all the users in Tally? So what I will say, it is a basic security. I will show you just now. Once we have decided, let me just take you to the next one, tally.net user. Here everything is open for them. Understand? And here I am giving them the owner facility. Now tally.net user is a one additional license basically. 2 person can use single user. Matlab I sitting here and the next person sitting there can use my tally.net user license and enter into my data. When I authorize them for the tally.net remote access in F11 feature. So tally.net user is this. Even we as an auditor need to be authorized by the company to enter into the data. And all these facilities, tally.net, wherever .net word is coming, it is running through an email address and it will be through remote access. So basically you don't need to be in that company. Even I'm sitting in that same company, I can work on my laptop using remote access. So not disturbing their infrastructure. Okay. So once it is done, the question of Karishma is like this, users and password. So when I go here, I can create new user also to whom I want to authorize as auditor. I can write their address here, or I take from the list available with me, that option. Now password screen, it jumps in Tally. This person whom I'm authorizing has to use its own password. DVD and Coca, they have their password. So allow browser access, yes. If I authorize them, allowed remote access, yes, and allow local TDL file. क्योंकि बहुत सारे customization अगर हमने की है तो it is through TDL file, and that reporting can work if I authorize that person to use that. So just pressing enter, I go down. Now here again that security list. Out of this, what you want the person to be authorized. So now owner. So owner right in roles we have already decided. Roles may whatever features I want to give, enabling, disabling, then that will be happening there. And then I come here, I write the person name and then I have to write the password. And forgetting password, that person. Here password policy is also there, like in Google prompting you after 7 days, after 15 days. You want to change, you can change. So all the owners will have the same facility in this computer. I am using this feature in this Tally, what you can say, exe line. Her question is that I go to your next computer. In this company, see, it is qua company this definition is happening. It's not qua Tally it is happening. Qua this company, yes, this whatever definition I've done,
Basic comes from the Tally inbuilt. Understand? Data entry, owner, auditor, user. Basic features will come in all Tally by default. Then you can change in that particular company these features. It is based on this. Once I change, it will be applicable into this PC. Ideally, in this PC, it will remain same for most of the company. That owner definition and whatever 3 companies I have opened just now will partake that characteristic. So owner and then password, and what I wanted to convey was that these are my data operators. They are sitting in my internal office and doing the data entry. So they are not authorized to see the browser access. Why? Browser works with the user ID password, which is tally.net subscription. So authorized user only can see the remote access as well as browser access. Again, I repeat, there will be email address, will be the user ID and password, which if you forget, we can reset. That also we will learn how to reset the password. I hope I have clarified security control कैसे create करना है and how we can go ahead now. Now we have to understand, today we have to create the voucher. तो वो आज ही खत्म हो जाएगा ब्राउजर एक्सेल. यहाँ पे देखो मैं अभी बता ही देता हूँ, इतनी इंक्विजिटी है. tallysolutions.com में जाएंगे. When you go, here is something called login. So you all can log in. आपकी खुद की टेली की जो ईमेल एड्रेस है आप उसको लॉग इन कर सकते हैं. ये मेरा VMP था, बट वहां पे if you remember there was something called VVD was authorized. vvd@yahoo.co.in, and then I have to remember the password. God forbid if I'm not forgotten and if it is working, fantastic. So once I log in, I will have this type of screen here. Vandana Dodhia. And these are the company which is connected. Okay. Connected. And I can, यहाँ पे देखो सीरियल नंबर है, कंपनी लास्ट एक्सटेड 2 years 10 months ago. जब भी आपने एक्सेस करना है कर सकते हो. All repositories there. Now which company we were in? यहाँ पे देखो हर्ष प्रकाश डोलिया. So now I clicked on Harsh. I will go and see whether I am being authorized. Users and password में हर्ष में tally.net user है. VVDN Kuka, VVDN COCA yahoo.co.in. Yes. डालो. Escape. And now Harsh is on, no? So I should be able to see the Harsh basically. So it is not giving me right now. It should be available to access online. Connectivity status. Harsh Prakash Dodhia. Connected for browser access. Okay. Now, can anyone tell me why it is not showing me? Answer the question. Yes? All are connected for online access. Now let us see what it is showing me. Browser access. यहाँ से directly लेके जा सकता है. Directly you can come.
So I can see this way the reports. आपने आज ही ब्राउजर रिपोर्ट्स तो मुझे लेके चले गए. यहाँ पे जैसे कि बैलेंस शीट पूरा आपको दिखेगा. Whatever you want to see as at 1st April 22, 38,80,000. Manisha, you can see here. Manisha balance sheet 3880. आपको ब्राउजर में सेम रेप्लिका मिलेगा. Whatever is the data there, here is the download button. अभी आज ही ब्राउजर एक्सेस खत्म हो जाएगा. I think your answer is satisfied. Are you satisfied? So Tally gives you everything there. You can get as it is, जो भी है verbatim. और यहाँ जाके आपको रिपोर्ट फिर चेंज करना है. चेंज रिपोर्ट अगर कुछ रहेगा तो. सो पीरियड चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे जाके. यू कैन चेंज द पीरियड ऑल्सो. So transaction has to be there. Connect the company trial. Click here to view the list of companies. $32.67. $32.67. Whatever is here, you can see there. Basically, that's what we have to understand. उनको पूरा रिपोर्ट as it is देखने को मिलेगा. Are we through now? सबको ब्राउजर इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट है? I think I have finished showing you browser access today itself. Hello. हाँ दिख रहा है ब्राउजर दिख रहा है. हाँ मैं देखा, सबने देखा अच्छे से. So we will conclude with that क्योंकि अभी मुझे आपको वाउचर क्रिएशन सिखाना है. उसमें देखो 420. So we have 40 minutes more. And 10 minutes पर क्वेश्चन आंसर रखा है ना मैंने. Different type of vouchers. अच्छा, before going that backup and restore दिखा देता हूँ मैं. अभी मेरा कौन सा क्लाइंट है जिसका ERP लाइन पे डेटा आता है, मुझे वो याद करना पड़ेगा. एक सेकंड. Yeah, Pinky, where we were stopped? Sorry, can you tell them? Okay. Any data of ERP9 I want to migrate. That's what I will show them, how migration takes place and how fast it takes place. Okay, just a second. One thing I also want to ask, and Karisma is also asking, will this feature be valid throughout all the user? In Tally 9, it so happens that if I change computer, the features also change. Yeah, I also face that. Like for invoice making, in one PC it come in another separate format. In another PC it come in another format. So what the feature is same in all the PC, and what the feature will be different in all the different PC? Generally, configuration screen is different in each user's machine. So you need to have a uniform setting. So once I give right to my user, even for us also sometimes happens when Mane is printing, वो normal format में आएगा और मेरे machine में जो last configuration रहता है invoice printing का. So Prime में
90% it will be addressed. Okay, you can have a save view report facility. So that there Tally has given me options with this company or the all companies on this computer or throughout the my office. I want the same feature, you know. So then I will mail you the data, Pinky. You will also have that same feature viewable for you also. That same view feature is a separate facility now available, but configuration will differ from user to user, computer to computer. But एक बार freeze हुआ तो second time to open करेगी. Suppose कि एक company में वाउचर समझो मैंने बिल का एक सेटिंग किया, so that particular computer and that particular tally for the second company same features will continue. So if I have two companies, one is service industry and one is trading firm. So trading company. At that time वो F3 करते हैं तो आइटम इनवॉइस ही इमीडिएट दिखेगा. अगर तूने ट्रेडिंग का किया है तो फिर वो राइट साइड में जाके तेरे को बटन चेंज करके सर्विस वो अकाउंट इनवॉइस सिलेक्ट करना पड़ेगा. Yeah, that I want to clear that. कि if for all the company it will be same format. Same format in that machine. In my piece, in my machine, but in other machine it can be different depending on how they set the functions, you know. So yeah, and second is also I am facing that if I want to pre-printed bank account detail in my invoice, you will get. Yeah, but if I have 3 or 4 company, हाँ चार company है ना, I will show ना अभी ये बताती हूँ. Yeah. I will. So if in one account, if in one company I had selected Axis Bank, so but in second company it is State Bank. But so at the time of printing, आपको printing में जाके वहाँ पे select करना पड़ेगा. Yeah, but for every time I have to do this. देखो मैं voucher में setup में एक ही account freeze कर सकती हूँ. That is the only problem. वहाँ पे उन्होंने 4 option नहीं दिया है. समझो मेरी बात. अभी मैं जो सिखाने वाली हूँ ना वो voucher creation है. Very important feature. ये आपको वाउचर क्रिएशन करने के टाइम पे क्या-क्या बेसिक आप ध्यान रख सकते हो, व्हाट बेसिक प्रिकॉशन यू विल टेक केयर व्हिच विल ईज योर लाइफ. सो वो ERP9 का डेटा आई वाज आस्किंग माने कि एनी कंपनी डेटा इज देयर, मुझे याद ही नहीं आ रहा वो ERP9 में किसका डेटा होगा. ठीक है चल मैं देखती हूँ. इफ यू वांट आई कैन सेंड यू. मैं वही बोलने वाली तेरे को मेल कर मेरे को फटाफट कोई डेटा तो मैं बता दूँ. just give me 1 minute, I am sending you. Yeah. तब तक पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन होवे तो पूछ सकते हैं. पर उनका जो भी है किसी ने हाथ खड़ा किया है. 1 पर्सन है. उनका क्वेश्चन ले लिया मैंने. आई टेक इट. यू आर टेकिंग केयर. चल पिंकी है ना तो मुझे आसान हो जाता है लाइफ. माय लाइफ इज एट ईज. So by the time that comes now we can take it in. It will take 2-3 minutes only later on. तो मैं वाउचर का चालू कर देती हूँ फिर डाउनलोड करके बता दूंगी उनको. राइट I can show them now. So let us understand now creation of voucher. So basically when today we have just opened one company workshop on Tally WRC. So let us understand how it will work. So if I take you, अभी जो फीचर है अपना गेटवे ऑफ टैली में हम लोग कैसे हाउ वी आर क्रिएटिंग. क्रिएट है. क्रिएट के अंदर नाउ दे हैव गिवन ऑल द ऑप्शंस. अकाउंटिंग मास्टर्स, ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर. प्रीडोमिनेंटली लेजर जो हमारे पहले जो आते थे लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश. 2 ledgers only they create for us. Now one more feature has come in Tally is show inactive ledgers. यहाँ पे देख सकते हो master creation. So बहुत सारे redundant accounts. Some big corporates have that problem. So that inactive accounts they can later on delete also. Inactive inventory items or 10 years हो गए transactions है ही नहीं. So that all can be removed. So data size will become less. So that all now in Tally Prime you can do all that thing. Now in accounting master. Now you can see group, ledger, currency, budget, scenario, voucher type, credit limits. Each everything. Payroll master मैंने F11 में yes किया तो employee category, employee group,
एम्प्लॉय का खुद का नाम, फिर यूनिट, अटेंडेंस, पे हेड्स, पेरोल, वाउचर टाइप, एवरीथिंग, स्टेट्यूटरी मास्टर, टीडीएस, नेचर ऑफ पेमेंट्स। तो यहाँ पे जाके आपको क्रिएट करना पड़ता है. नाउ टेली इज मेड यू ओनली क्रिएट, बिकॉज गवर्नमेंट इज चेंजिंग डे इन एंड डे आउट. कभी ये सेक्शन चेंज होता है, वो सेक्शन चेंज होता है. यू ओनली क्रिएट द नेचर ऑफ पेमेंट, you only write the threshold limit. I will give you the one more feature, applicable rate of TDS from which date and threshold limit. So उन्होंने आपके मतलब they were tired. Every time it is changing, you know. So they said every time I can't come with the statutory updates. So let it make user friendly. So user can change. In रात को उठ के सुबह ही आपको change करना है तो to change the whole program it takes time. But here in this I have enabled a feature. So from effective date, this rate of TDS will, like उन्होंने 14 May 20 से rate of TDS has changed from 15th of May 20. So sudden change comes to date, effective date of rate of TDS you can put in Tally and you can start working. So Tally will take care. So on that particular percentage, I have to cut like with this rate of TDS, you know, that was the idea. Now we were on a voucher type. Voucher type, here is what I go for creation. सबसे पहले हम सेल्स का समझो करते हैं तो उसका इट इज माय प्रीरोगेटिव टू कीप द नेम ऑफ वाउचर. आई कैन गिव जीएसटी इनवॉइस. अगर मुझे ऐसे रखना है तो आई विल क्रिएट से जीएसटी इनवॉइस और उसके बाद इतने वाउचर टाइप उन्होंने दे हैव गिवन इनहेरेंट वाउचर विद देयर इनहेरेंट एबिलिटी कैपेबिलिटीज. सो आई विल सिलेक्ट जीएसटी इनवॉइस शुड partake the characteristic of say sales. So I will select sales. So abbreviation is that. Activate this voucher type. I will say yes. Now method of voucher numbering is very important. I generally recommend, Tally also says, automatic manual override. So somewhere down the line you want to have some flexibility, keep it automatic and prevent duplicate. Obviously yes, we cannot have a duplicate voucher number. And then you go to advanced configuration, you say yes. What you will learn here, what will be the starting number of your, now you may see Tally has given me 17th of May because my books begin today. Otherwise it would have given me 1st April 22. That is the difference I wanted to showcase. That's why financial year and books beginning two separate date today I specifically mentioned. Now say starting number is 1. I know okay, I'm going to have say, up to 10,000 very sales. I'm going to have a sales invoice up to say 9,999. So I can have a numerical part as a 4 digit and pre-fill with 0 yes. If I know okay, my sales invoice will exceed the count of 10,000, then I have to put 5 over there. Now once I say, so यहाँ पे उन्होंने only, but there is a hinge in Tally के this I wanted to show only first of the month is allowed. So अभी वो मुझे यहाँ 05/22 allow करता है. So that is उनको middle of the month आप date change नहीं करते. इसलिए मेरे काफी सारे clients जो traders रहते हैं, वो छोटे vendors रहते हैं, retailers रहते हैं, वो counter sales use करते हैं. So we tell them कि ये पूरी series जब change होती है, continue series कोई इश्यू नहीं है, बट नया कुछ करना है या तो मंथ के स्टार्टिंग में टैली अलाउ करता है. सो यहाँ पे फिर ऑप्शन है, आप ईयरली चेंज कर सकते हो, नंबरिंग वीकली कर सकते हो. काफी कंपनीज में हर मंथ का अप्रैल ऐसा नोटेशन आता है, तो दे चेंज एवरी मंथ दी वाउचर नंबरिंग. तो दैट हैज टू बी डिफाइंड हियर कि मुझे वीकली करना है, कभी नहीं करना है, मंथली करना है, जैसे भी करना है. तो फॉर दिस आई टेक इट हियर मंथली ईयरली. अच्छा, व्हाट डू मीन बाय प्रीफिक्स? तो अगर आपकी कंपनी का नाम है, समझो अभी हम लोग लिख रहे हैं WRC कवर से प्रीफिक्स एंड स्लैश, फ्रंट स्लैश डाल दीजिए 1 May 22 एंड देन साल 22-23 चल रहा है तो प्रीफिक्स करके आपको 22-23 लिखना है, या 16 डिजिट का वो है तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है. यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर्स. ये यू नो समटाइम्स पीडीसी देते हो तो वो इफेक्टिव डेट या आज डिलीवर डिस्पैच हो गया. I have sent you data on WhatsApp. ठीक है, मेल किया क्या बेटा?
व्हाट्सएप किया था. व्हाट्सएप मैंने बंद कर दिया. मेल No में problem. I am sending you mail. हाँ Just- मेल में डाल दो, मेल डाल दो, बेटर रहेगा. ओके, सो यूज इफेक्टिव डेट्स ऑफ वाउचर्स. अगर इफेक्टिव डेट रहेगी, ये फीचर ना बहुत उसमें काम में आता है. जब हम लोग पीडीसी भी इश्यू कर देते हैं तो इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर विल बी दैट टुडे आई वांट टू एंटर इन टैली, बट इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर्स, so that feature is also available in Tally कि मेरे को लेटर डेट पे वो ट्रांजैक्शन बुक होनी चाहिए. वो आप यस करो यहाँ पे. जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस इफ यू वांट टू परमिट, तो देयर आर सैंपल्स, फ्री सैंपल्स जीरो. यस, make these vouchers are optional by default. Abhi optional voucher is I don't want to post it to the Tally books of accounts, then it will become optional vouchers. So certain memorandum entries you don't want it to come to the main books of account, but I just want a summary of certain transaction happening, so that is optional vouchers. Allow narration in voucher, yes obviously we will allow, बट ईच वाउचर पे चाहिए तो यस करो या तो नो रखो. मैं जनरली नो रखती हूँ. डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, डिफॉल्ट मींस यही अकाउंट में वो क्रेडिट होगा, तो वो डिफॉल्ट रखना है तो यस कर सकते हो, अदरवाइज नो रखो. प्रिंट आफ्टर सेलिंग, जैसे ही आपका सेल बिल हुआ आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे यस करना है. पीओ पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइसिंग, वो जो छोटा छोटा मेट्रो के बिल होते हैं, छोटे काउंटर सेल्स होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स इनवॉइसिंग तो नहीं है. डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, आई वांट टू प्रिंट जीएसटी इनवॉइस, so that can be my heading. Now default bank not applicable. तो अभी मैं यहाँ email sent to you. Thank you madam. अभी यहाँ खड़े खड़े मैं अभी वाउचर क्रिएशन में हूँ and I want to create a ledger bank account, so I can just press Alt G and I can go to create master. That is the beauty of now new Tally. I want to create a ledger, say Bank of Baroda. Under the bank accounts group I have to select. Then activate interest calculation. देखो F11 में yes किया था तो it will give me, you can say yes to here. Calculate based on a voucher date or a bank record date. So we will take it on a bank record date. जब भी मेरे खाते में आएगा तभी मुझे इंटरेस्ट चालू होता है या देना पड़ेगा इसीलिए. On amounts added as well as deducted 4% समझो है 365 days a year on all balances. समझा? तो ऐसा मैंने डिफाइन किया है. इट इज अप टू मी, डेबिट क्रेडिट जो मिलना है वो लिख सकते हो आप. आपका अकाउंट नंबर डाल दीजिए, आप आईएफएस कोड डाल दीजिए, स्विफ्ट कोड पता नहीं. तो अभी अब वी आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड इट इज अ ऑथराइज्ड टेली लाइसेंस. तो आपको यहाँ लिस्ट ऑफ द बैंक ऑल्सो कम्स एंड यू सिलेक्ट फ्रॉम दी पॉपअप कि मुझे ये बैंक चाहिए. देन ब्रांच कौन सा भी है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए. Can we calculate interest for FD also? यस 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 यस. अभी अपन एक क्रिएट करते हैं ना एफडी, आज वो देख लेते हैं. नाउ सेट अल्टर रेट, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है. जिन लोगों को ये यूज करो, ये फीचर काफी लोग यूज नहीं करते. आपकी जो चेकबुक आती है यहाँ पे यस कर दो और यहाँ पे नंबर डाल दो. वो जो चेकबुक आती है, चेकबुक में से देख के आपको नंबर डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में मेरा चेकबुक है, सो आई कैन सी दैट नंबर एंड आई कैन पुट दैट नंबर हियर एंड व्हेनेवर आई स्टार्ट प्रिंटिंग आई कैन यूज टैली विल पिक अप. एक का हो गया, 2 नंबर का चेक है, वो दूसरा ऑटोमेटिक खुद लेके आएगा. यू डोंट नीड टू पंच ऑल्सो. दैट इज द ब्यूटी ऑफ टैली. जितना आप ऑटोमाइजेशन, व्हाटएवर लेवल ऑफ ऑटोमाइजेशन इनबिल्ट टैली में है, दिस इज नॉट कस्टमाइजेशन. अंडरस्टैंड दैट. मेरा 00101 करके चेक है और 50 का लीफ है, तो 000150 एंड नंबर ऑफ चेक्स उसने लिख दिया. आप उसको नेम डाल दो कि VVD1 या जो भी आपका नंबर डालना है. तो यहाँ पे फिर दूसरी चेकबुक है, समझो मेरी दूसरी चेकबुक पड़ी है मेरे पास, समझो 201 से 250 तक की है, तो उसका मैंने नंबर ले दिया. तो व्हाइल डूइंग द डेटा एंट्री इट विल बी प्रॉम्प्ट मी कि कौन से चेकबुक में. बहुत से लोगों को मालूम है कैश की चेकबुक अलग रहती है, इसकी अलग रहती है नॉर्मल पेमेंट की. सो दैट इज व्हाट. चेक प्रिंटिंग यस कर दीजिए, यहाँ पे आपको एनेबल कर दिया. सेट अल्टर, ये मेरा बैंकिंग मॉड्यूल पूरा इसी में क्रिएशन में आ रहा है. तो यहाँ पे वो पूरा उन्होंने दे दिया है. यू सिलेक्ट विच नंबर यू वांट टू डू एंड
ऑटो रिकंसिलेशन अभी मैंने एनेबल नहीं किया है, उस दिन करेंगे जिस दिन हम एनेबल करेंगे इसको, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैंने आई वॉज इन टू द वाउचर क्रिएशन एंट्री, वाउचर टाइप जीएसटी इनवॉइस। तो मैंने एक आपके लेजर क्रिएट किया, मैं अभी एक बार एस्केप मारूंगी, दूसरी बार एस्केप, तीसरी बार, एंड अगेन आई एम ऑन द बैक स्क्रीन वेयर आई वाज वर्किंग। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द न्यू टैली प्राइम। ERP9 में ऐसा नहीं होता। आई हैड टू गेट आउट ऑफ जितना आगे का whatever work I would have done was either I have to save or I have to escape. So that is what here in Tally Prime, you don't need to escape from the transaction where you were there. It will bring back you to the same transaction. That is the best part of Tally Prime. So no sooner or later, educate your client to move from ERP9 to Prime. That is my suggestion. अभी यहाँ पे set alter declaration आप yes करोगे, when you say yes, it will allow prompt you that screen and it is a editable screen. So आप whatever you want to write, you can write in your screen. Okay, Control A. Now I had also said I will teach you the class also. पहले एक बार save कर लेते हैं whatever we have done, and then again I will come here and create the class. Class can be created with certain ledgers if you have created. So I have saved. Okay, and in purchase also you can open expense purchase voucher. Expense purchase. We will take it from GST point of view visibly. Select type of voucher, purchase. And automatic manual override, prevent duplicate, yes, use advanced configuration. यहाँ पे भी whatever you want, you can write with whatever nomenclatures you have. I have, this is EXP slash, then 1st of May, and then slash 22-23. Then save, then save. So I have created 2 vouchers right now. And I want to, whatever I want to do, I have to keep creating certain ledgers. Without that, we cannot park any entry. Okay, default accounting allocation. Generally, I say don't do default because while doing, so for that, let us create some account. Na, allocate करने के लिए, when you want to allocate that, you need to create some ledgers, you know. So let us create some ledgers. Now, one question is there. Explain enable default accounting allocation. That's what I just spoke. Na, कि enable billing allocation कब होता है? There has to be certain ledgers created. फिर I can allocate that. And that's what I was trying to take it up this way. First, let us them understand voucher type creation. They have understood allocating bill. Oh, yes or no ही करना है. When I say yes, see, I will go to alter voucher type GST invoice. What she is asking me is this. यहाँ पे मैंने yes किया तो what? Set alter defaulting according to yes. So this is voucher class. अब voucher class करने के लिए यहाँ पे कोई ledger ही नहीं है, इसलिए मैंने that's why I never wanted to touch it at this juncture. After 5 minutes, we will come back. Understood? Unless there is a ledger, what allocation I can do? That's what I was trying to tell her. Understood? अभी मुझे इसको no रखना पड़ेगा. This is today we wanted to know that Tally has the voucher creation inherent. There are vouchers. See, purchase hai, purchase is there. So now if I go here, this is basic given by them. So basic also can be altered by me. Automatic का मैं automatic manual override कर सकती हूँ. But it should be done in the start of the year. Don't do it in between. It will hamper your numbering and everything. So this creating a voucher should be the start of the year exercise. That is my humble request. In between, आप new voucher create कर सकते हो. अगर if new things come, a separate voucher type you want to create, you can create. But don't meddle with the existing vouchers which are already there. So that is the crux of the matter. Don't meddle with what is already there. Pinky, there was one more question before allocation. Something was there. It was on FDR interest calculation. So your question also was there. And today we have seen that feature. So let us have create some lecture, some your FD with Bob. Okay. So I will put it into the deposits.
And see, here it is activate interest calculation, you write yes. Now amounts added yes, amounts deducted, generally deducted as such नहीं होगा, फिर भी yes रखना है तो रख सकते हो. यहाँ पे हमें एफडी का आजकल 5% इंटरेस्ट रेट हो गया है. कैलेंडर ईयर भी ले सकते हो या 365 डे ईयर ले सकते हो. आप क्रेडिट बैलेंस पे ले सकते हो. आपने तो एफडी रखी है तो डेबिट बैलेंस पे रहेगा. अंडरस्टूड? So if I can define here debit balance or all balances, and then I save it. Now there has to be transaction in there, right? So vouchers 17 में अभी यहाँ पे F2 करके आप फर्स्ट में डाल ही नहीं सकते हो. देखो बोला डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल बिगिनिंग डेट 17 में. तो टुडे इफ यू हैव क्रिएटेड अ कंपनी तो उसके पीछे इट विल नॉट अलाउ यू टू गो बैक. But voucher creation it allowed me, that is क्योंकि वहां पे by default they kept first of the month. So Bank of Baroda FD with both से 1 लाख रुपीस आपने FD रखी है वहां पे. अभी देखो that I wanted to show you check range. You can select from the checkbook which checkbook you want to issue the check. So by default Tally has brought the first number check. So this is banking module of Tally. If you configure properly, it will pick up the check from that. Check number also from that. For 1 year surplus. लग गया. अभी हमें करने के बाद उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन लिखना है. डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंटरेस्ट रिसीवेबल. अब देख Alt F2 અને you put it up to 31/23. Understood? Tally gives me this report. So at least you don't need to break your head. Automatic every calculation will come. Are you happy? Pinky and other participant. Hello, Pinky. Yes. Very important now. Yes. क्योंकि लाइफ इज सो आई टोल्ड यू ना कि देयर इज अ इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल रिपोर्ट. पूरा इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कंटेन्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन टैली ऑडिट एंड स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स मींस डेटा एंट्री कितनी हुई है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, 28 बाय डिफॉल्ट बाय टैली. ledgers 4 cash was there, profit and loss, and 2 ledgers I created, so 4 ledgers. And voucher type 26 means 2 we created, 24 by default comes. So this is how it works. Yes. Jagdish bhai, of course we can print. That's why see, I never went into that configuration because I am worried. It's very over. Tomorrow is first thing banking module covering preparation of slipbook, checkbook configuration, auto bank reconciliation. It is tomorrow's aspect. Today, now whatever data she has sent, now let me just transfer that data for you. That also you need to learn. So this way the data will come from the client. Immediately I will show you mark voucher. We will do some 2 entries and we'll see that report. Okay, Pinky. So once this comes, let us park it into the our workshop on Tally folder. Control C, Control V, enter. Then save, then showing folder, then right click and extract here. So we'll again Control C. Again, I am telling you this feature is important. Control C. I go to Tally Prime, then Alt F3, then specify path. Enter. अरे क्या वो तो already था उधर. मैं वहां से लेके आई. But if you see, already I have pasted in the same folder and migration required. It will be written here because it is ERP 9. It is prompting me migration required.
When I press enter on this, it will ask me whether you want to take a backup of this and where you want to take a backup of this. So if you have that folder defined, see, destination path has been defined by me. Right now, because she has sent me an email, I don't want to take a backup. So I say no, Control A, and then I will migrate the data. Because I have somewhere the backup lying with me. Understand that thing? Then time only I will take that code. Okay. So this has come to me and the data is migrated. Rocket, when we are talking, migration has taken place. There is data or not, we can check here. So data is there in the last particular year. So last particular year, there are certain transactions. Now, can I do some transactions? So Alt F2 main screen pe jaake 31,322. But have you noticed there was no password? Hello. So first of all, I will create the password. So make it important for us. Right or wrong? Password होना चाहिए ना? Alter. यहाँ पे मैं yes कर देती हूँ. Again, we have come here. Now small letter. Enter. I remove password before sending so that you can show how to create password. अच्छा किया तूने. You are right. But दिखा. हाँ, मैंने वापस से वो create password भी किया. And the best part is that what happens. I wanted to teach them. Understand कि whenever data comes, उसको password protected करते. और हमने F11 में जाके ये मार्क वाउचर को यस करना है, बराबर? ये मैंने यस कर दिया. ओके. और इफ यू कैन थ्रो लाइट के क्या है इनका अभी, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज. अच्छा चलो सस्पेंस है. लेट अस पार्क इट समवेयर. मार्क वाउचर था, मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के उसको टैली कर रही हूँ. फॉर एग्जांपल 5600 किसी को भी दिया है. चलो ना एक्सपेंसेस में डालते हैं. कोई तो बिजनेस प्रमोशन अब नहीं है, मैंने क्रिएट कर दिया बिजनेस प्रमोशन. तो ओनली इश्यू व्हेन यू ट्रांसफर दिस डेटा, आपको तो मास्टर भी भेजना पड़ेगा या फिर आप उनको वो भेजो, ओनली एक्सेल भेज दीजिए ताकि उनको देख के एंट्री करना इजी हो जाए. अब मैंने देखो कितना घाई किया. बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस आई टू डिफाइन नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मुझे अभी वो जीएसटी में नहीं जाना है. फॉर एग्जांपल एंड कंट्रोल ए करके मैंने सेव कर दिया, सेव कर दिया, सेव कर दिया. 5600 पार्क हो गया. अब हमें वो रिपोर्ट देखना है तो आप ऑल्ट जी करके मार्क वाउचर्स रिपोर्ट है ना, डायरेक्ट सीधा वो लेके गया. और यहाँ पे देखो मार्क वाउचर में आपको मिल जाएगा ये रिपोर्ट. तो इसी को फिर आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करके भी भेज सकते हो, एक्सएमएल बना के भी भेज सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो क्लाइंट को कि मैंने जो जो काम किया है. अंडरस्टूड? आर वी गेटिंग? क्योंकि उनका ऑनगोइंग डेटा है. आप 2-3 दिन यू आर सेंडिंग द डेटा आफ्टर ऑल्टरिंग 1 or 2 days, then there will be mismatch. So it is better I put it into mark vouchers. So mark voucher report is coming. Okay, I have altered this. And F12 में But what I have altered in this that has not been given. वो तो that is not the need of our ना. What work you are, see this is was suspense ना, suspense clearance चल रहा था. क्लाइंट का जब भी डेटा आया, आपने which voucher you touched, that is the report is giving. No, सपोज के उनका कोई दूसरा वाउचर है जो ऑलरेडी कहीं पे पड़ा हुआ है, से कैश इन हैंड में ही है. यहाँ पे अभी ये 10.5 रिया भट्ट ने 35,000 कैश डाला था बैंक में फॉर एग्जांपल, एंड आई गो एंड एडिट इट से 45,000 फॉर एग्जांपल एंड सेव कर दिया. तो ये भी मार्क वाउचर में चला जाएगा. Are you getting me? Display reports, mark vouchers. It will come here. The fundamental what you have to understand difference is that whatever changes are done by you will be captured. You मतलब जब mark voucher enable हुआ तभी ये factor करेगा. It will take that. And then afterwards they have already acknowledge it or parked in their books of account. You can clear all marking. आप यहाँ से निकाल भी सकते हो. Are you sure you want to clear marking in all vouchers? अभी वो मार्क करके रखा है क्योंकि आपने किया है करके ऐसा. That's what I wanted to show you.
और F12 में यहाँ पे ये देखो एंटर्ड बाय में भी यस करोगी तो आपको किसने किया है, बंदे यूजर आईडी जस्ट क्रिएट किया, so it has been entered by me, that also information will go to the user, the next party will understand that thing. So we understood, let's understand के tally, what we understood, migration we understood, company creation, path, where you have to do, what are the basic things you should remember. F11 feature is the enabling session or start of the tally. Whatever features you want to enable, understand that in depth and applicable to your company, that only you can enable the feature. And now what else, any query? How to set the report in XML import. तो यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे ना, यहाँ पे ऊपर अदर्स लिखा है या सो भी ट्रांजैक्शन है, कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रांजैक्शन भेजना है तो आपको डिफाइन करके भेजना है XML डेटा इंटरचेंज. सो कौन सा भेज रहे हो उसके ऊपर है, डिपेंड्स. अभी मार्क वाउचर थे, अभी यही रिपोर्ट समझो हमें भेजना है तो ऑल्ट टी करेंगे और यहाँ पे करंट करेंगे और सीधा वो XLS फॉर्मेट में चला जाएगा. फिर तो आप मेल कर सकते हो ना बाद में तो उसको. दिस इज हाउ इट विल गो. अभी मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन ऑन रखा, व्हाटएवर कॉन्फ़िगरेशन आई हैव ओन, that much information they will get. So narration was not there, for example. So if I want to send the narration, I have to F12 narration yes, detail yes, bill by detail yes, mode of payment yes, additional bank details yes. ये सब ओके करने के बाद अगर मैं एक्सपोर्ट करती हूँ ऑल्ट ई, पहले मैं एक्सेल को बंद कर देती हूँ, so we can overwrite if the same name comes. Okay, current and then config send. So whatever I have selected on the screen will go to the client. Basically, that you have to understand. So whatever you want to send them, so then they will take a call. This is Excel file I have done. I can select the XML also, but only quotient, word of quotient. I said master. Now business promotion, I just now created that ledger that they don't have, that other party doesn't have. तो वाउचर इंपोर्ट करने के टाइम पे उसको प्रॉब्लम होगा, it will create a issue, error will come. So Riya Bhatt is already there. So suppose I can just make it up to say 30th November 21, and then I want to export the data current. Then I go to configuration, and then यहाँ पे Excel की जगह पे मुझे चाहिए, मैंने टैब की यूज किया, टैब XML, and then we have to just save it. Okay, and where it is going, the folder path I can decide, specify path, and control V is the path where we were working. So control A and then save and then send. So यहाँ पे XML बन गई, अभी उसको हमें इंपोर्ट करनी है. तो रिया भट्ट हमारे पास ऑलरेडी है, डुप्लीकेट वाउचर हो जाना चाहिए अगर मैं इंपोर्ट करती हूँ तो. मार्क वाउचर में से तो चला भी गया, क्लियर हो गया. अभी मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है. सो import, and then what I want to import is transaction. So when I go to transactions, I have to specify path, file path. Import transaction, specify path, enter, control V, and this is the file. So उसने import किया, अभी क्या लेके आया, let us explore. Riya Bhatt capital account, November 21, 45,000 there.
तो वो लाएगा. एक्चुअली क्या होता है सेम ट्रांजैक्शंस में मुझे कोई नया करके इट हैज ओवर रिटर्न बेसिकली 45 वी डोंट नो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ नया कहीं बाहर करके फिर वहां पे करके फिर मुझे इंपोर्ट करूंगी, देन आई विल एबल टू शो इट. बट दिस इज द प्रोसेस. यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. First, I exported in XML and then imported. One thing you have to remember, when you have created the new ledger, you need to send the master also to them or ask them to create the master. Okay, very good. I like the questions. Question है मतलब लोग attentive है. That's very important. Okay. So certificates तो हमने कुछ खोला ही नहीं है तो बनाना पड़ेगा. हम बनाते हैं हमारे वर्कशॉप वाले की टैली में. Let's come back here. And Alt G is my favorite this thing. Create master. Agar see, first of all, you understand in Tally what kind of reporting you want. So if I want, data separate, I can create northern data, eastern data, western data as my group. Syndicators for purchase, syndicators for expense. ऐसे भी आप group बना सकते हो. Try to explore whatever best way you want to extract the report. First, analyze in your mind what kind of reporting you want. Accordingly, you decide the architecture of your creditors, daters, and then you will get the report. So suppose here in group I go, I can create creditors. I want to separate out. Vandana, can you repeat the import the transaction step again? Take minute. Creditors for expenses, sundry creditors, and then group behaves like a subledger. When you want to behave that group as a subledger, say yes. Reporting net चाहिए तो yes करो. Calculation के लिए use कर. If you want to use for calculation purpose taxes, say yes. For sales invoice entry and method of allocate in purchase. This is not right now. Suppose applicable, that's not applicable. Yes or yeah. And Control R. I press Control R. Credit for expenses will come. I will write here purchases and sundry creditors. So same, it comes back and I can save it. Okay. And now coming to ledger. So Mr. ABC, I want to create, just give me a minute. I am showing import sundry creditors. So now this is basic sundry creditors. So now what you created is creditors for expenses and maintain bill by bill. Yes, F11 feature enabled rahe. You have maintain bill by bill entry. Here it will prompt me yes or no, depends on me. So yes, educate your entry person to say yes. Default credit period 7 days, 30 days. Once you freeze this, for all the bill it will take 30. And if there's a change, you punch in with your hand. Check for credit days during voucher entry, yes or no, depending on you, you can do this. It is up to you. Then activate interest calculation. Yes, if I delay the payment, I need to pay the interest. So I can say yes. Transaction by transaction, yes. Override parameters for each transaction, yes. Amounts added, yes. Deducted, yes. Say 12%, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. आजकल ब्याज ही कहाँ मिलता है. And all balances, you can define Mr. ABC. उनका एड्रेस डाल दीजिए. यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए. Then मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं. You punching, provide contact details, say yes. Put the contact person details. So this tally will work as your directory also. Say Vandana Dodhia. The phone number 8692999281. Email, whatever you mention here will be available for you. And I want to send them directly the mail. It will help me. And if you want, Tally gives you CC facility also. So website रहेगा डालो. Multiple mailing details. The client may have multiple mailing details. They want to send it to A location to B location. So A location, then put that address, pura address, everything you can put of that client. So in
That client having 2-3 offices within Maharashtra or in Pune also there were 2 offices, A location, B location. Heading, you give the heading and you can insert 2 address of that same client with the same GST, and because GST number also details you can punch it down. Okay. So everything is possible. Keep exploring. That's what I always say. Keep exploring the Delhi. PAN, GST number, consumer है, consumer डाल सकते हो, B location. And there, if it B location पे regular है, मतलब कुछ और है उसका, एक जगह पे है, नहीं है, whatever. Ideally, the GST doesn't allow. Once you are having registration, all units across the India will be taxable. Any transaction which is under the GST law will be taxable once you have taken the registration. Understood? Then provide bank details. You can also design I want to pay e-fund transfer or I want to pay the check. And you can write the account number of the client readily available. And जो भी होगा, it will prompt you कि मुझे क्या चाहिए. 4 times A, then 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So Tally inbuilt internal control is there. Okay, one character is कम ज़्यादा जो भी है, it will ask you, and then you select the bank. So there are even some bank configured है उनके साथ, and हमारी which bank from which bank we will be making the payment. This I don't know what is the beneficiary code means, that I need to ask them. Party's registration number, if it is available, you write. Consumer, you don't write, and then you say, yeah, this is TDS applicable, then you have to write yes, and if once yes, what type of statutory payments you are going to do, it also need to mention. So just creating a ledger itself is a very big task, but creation should be always multi-ledger या कोई TDL ले लो. There is a TDL. सोपर्स में जाके बहुत छोटा, I think 560 rupees में मिल जाएगा. So that they can use. I will just showcase you once again that import, right? Okay, I can do this way now. Pinky, we can explore this way. Let's go to RIA and let's go to November. And let me delete this entry or put it to optional for that matter. And it is gone out of my this thing. यहाँ से निकल गया. अब मैं उसको import करती हूँ जो मैंने export किया था. Now I go to transaction and then control A and then ledger and then RIA and then alt F2 first November. Transaction has come. So import is coming. Understood? It was already existing now, so you will not understand that it has actually imported the data. Oh, that has overwritten the data. But now I showed you optional voucher. You want to see the optional voucher? Also, it is lying there. इसने overwrite किया. एक मिनट, display account manager, display exception reports, optional vouchers. So it has overwritten the optional voucher, same date, same thing. It is not showing me, na? I put it to optional, it has made it regular. Understood? Yes. So live exploration of the data. I loved it. Good, someone asked me. Wait, optional vouchers, period is same, no? It is biased. Tally always shows last date of last entry. So import I shown you, backup restore भी होता है, लेकिन वो आपका यहाँ पे alt G main company creation alt F3. But this is data. Backup is there, restore is there. So that they have started data path. Pinky, this is for you. You can specify company का data कहाँ से मिलेगा, and company that you can define, and that remote client rule synchronize, which I said, this we need to explore.
Vandana, one thing I want to know, if I have lots of creditors, but I had not filled all the details in master creation, like GST number or address like this. So how can we do in one go? See, here there is one report ledgers without email IDs. And then I can do this. Jaake, there is something called you. What I told her, multi-ledgers you can do, or there is some, some TDL must be available. Shoppers में जाके. Where it was this report? Exception reports. Ledger, okay, ledger without Without email IDs. आपको एक report ही दिया है. They have given. Okay. And her query, I'm trying to just explore कि multiple ledger alt G multi. So if I want to put GST number like in our study circle, now we have to put GST number for all my members. Yes, one go हो सकता है क्या? Huh. So one go, if it will not go to go one in one go, then I have to put for 1,500 members. If I will put one karke, then it will take more time. I'll give you the solution. Okay. I think we have already completed the time given to us for the day. Participants are happy. They can write. Yes, all are there till up come 5 p.m. I guess it's a 5-9, but all are there. No one left the session. So Vandana has that specialty that she can. Yeah, they are giving the this thing, ma'am. It is a nice session, benefited a lot. Two good session. Thank you for such a live session. So there are very positive remark you are getting. So but I want to tell all the participants that Vandana is here for 4 days. So take the maximum benefit what she have, and she love to share her knowledge with everyone. Like many speaker, they don't want to tell, they want to tell only 80% or 90% what they know, but Vandana want to share her knowledge 110%, if I'm not wrong. My foundation is sharing is caring, and see, it's an ocean. More you give, more you churn, and more you learn. Basically, when I'm Correct. teaching them, I'm learning. And questions, Yeah. Pinky, if they ask questions, now we upgrade ourselves, basically. Yeah, so I want to share the progress to our participant, that from tomorrow, from next session, I think the meeting pattern will be changed, and they can share their video. They can put That in, you can enable yeah. them now. What? Yeah, because there was some technical problems, so it was in other mode. But from next session, we had made that key. They can open their mic also, and they can put their video on mode also. So thank you all the participants for your positive feedback and for your live participation. When they keep posting the question, or it implies that they are engaged. I can understand. Yeah. I'm also one of the faculty, so I can relate to this. Then when the participants are giving feedback or they are asking the queries, then we are getting motivated automatically that someone is hearing us, because in online mode or we can't see the face of any participant. So their word in the chat box is our inspiration or motivation to speak with ourselves in front of camera. I was blessed today you were there for me. I will be there everywhere, don't worry. बस वैसे भी हम दोनों ने सोचा है for participants, just we'll take one more minute whenever possible. I always admire thinking. I told her we can have a jugalbandi round, because she also loves tally, she likes tally, and she asks intelligent questions, so I also upgrade myself, So I request all the participants to carry this type of live participants in next 4 days also. And for today, I will end the session.
So thank you, Vandana, for your live session. And I also learned many things. कि किसी के से data आए तो तुरंत पहले सबसे पहले mark voucher we have to do. That I was doing, but not at the time of receiving data. But that and many more small things we are not taking care of. Like interest calculation that you are I not come to know. using. Interest calculation right now you are not using. Yes. You can start. Yes. Yes. Because the report comes, basic fund. Previously, what we used to do display account ledger, F8, tally RP9, F8 में जाओ, bill by bill मिलता था, interest calculation मिलता था. Vandana, we missed one question. One person was asking whether we can print the check from tally. कल सिखा रही हूँ ना, कल banking module है. Yeah. So the person who was asking that how to print the check, it कल is आना a live session. कल Yes. आना पड़े. Yeah. कल So आना it will पड़ेगा. be tomorrow. You will get she will print a one check and she will show you. मिश्रा जी को thank you बोलो for support. Yeah. And Thank thanks you. WRC. Yeah. Thank you all the participants. Vinay ji, Mishra ji, please close the session. Thank you, Vandana. We will see you tomorrow again at the same time. Yeah.